Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. I'm going to talk about the functions of glucagon today. But before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ये सूरह बनी इसराइल की सूरह इसरा की आयत है. ट्रांसलेशन इसकी ये है कि जिस बात की तुझे खबर ना हो उसके पीछे मत पड़ो. जो बात का पूरा इल्म ना हो उसके पीछे उसके मुताबिक फैसला मत करो, उसके पीछे मत पड़ो. पूरा इल्म जब होगा तो उस बात की, जिस बात की मुकम्मल मालूमात ना हो तो उसकी ना बातें करो, ना उसके पीछे पड़ो, ना उसके मुताबिक अमल करो, ना किसी के खिलाफ बात करो. इल्म ही नहीं है पूरा. वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ, बेशक कान, वल बसरा आँख, वल फुआदा और दिल, कुल्लु उलाइका कानू अन्हु मसूला, इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक पूछ गछ होने वाली है. क्या आपने सुना, क्या देखा, क्या दिल ने महसूस किया, क्या कैलकुलेशन की, क्या बात दुरुस्त थी, उसके मुताबिक फैसला किया जाए. तो किसी बात के कम इल्मी के साथ, ये फजूल वहम व गुमान के साथ किसी के पीछे मत पड़ो, किसी भी बात के पीछे मत पड़ो. बेहतरीन अल्लाह पाक ने उसूल बयान किया हुआ है ज़िंदगी गुजारने का. अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ glucagon. Glucagon is the second important hormone from the islet of Langerhans, and it is produced by the alpha cells. Beta cell produce insulin. Glucagon is produced by the alpha cells of islet of Langerhans in response to hypoglycemia. इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू हाइपरग्लाइसीमिया. इसका इफेक्ट भी अपोजिट है और इसका स्टिमुलस भी अपोजिट है. सो अपोजिट टू इंसुलिन. It is a small protein. It is a polypeptide, 29 amino acid polypeptide, molecular weight about 3485. It is known as hyperglycemic hormone, hyperglycemic factor. Hyperglycemic hormone is cortisol is also hyperglycemic. Growth hormone is hyperglycemic. Epinephrine is hyperglycemic, but this is specially called as hyperglycemic factor because of very strong, very powerful effect on this. That is only 1 microgram of this glucagon per kg body weight can elevate the blood glucose level within 20 minutes up to 20 milligram per deciliter. किसी का 100 milligram per deciliter है ना, उसको 1 माइक्रोग्राम पर केजी यानी 70 केजी 65 केजी के 65 माइक्रोग्राम उसको दे देंगे तो विद इन 20 मिनट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी एलिवेटेड 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. 100 हमने पर किया तो 120 हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी पावरफुल इन प्रोडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर और हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन. इफेक्ट्स हाउ इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया. Hyperglycemia without digestion, absorption of food, it should be functions of liver. Glycogen stores of the liver are the source of glucose between meals. When glucose is required, it is the glycogen. So there are two major effects. First is the glycogenolysis, breakdown of the glucose in the liver for the supply of glucose. So it increases the blood glucose level by causing breakdown of glycogen or glycogenolysis. And then second mechanism to increase the blood glucose level is new formation of glucose from the non-carbohydrate sources, that is which is termed as the gluconeogenesis or neoglucogenesis, formation of glucose from the amino acids in the liver. So these are the two mechanisms by which this glucagon increases it. So one by one we can discuss it. Glycogenolysis first. The glycogenolysis breakdown. This process of the breakdown of glycogen by glucagon has been almost very detailed information is there how it causes. That is, it is a protein hormone. It is the receptors must be present in the liver cell membrane.
So adenylyl cyclase is activated. Activation of adenylyl cyclase, second messenger mechanism uska. So the cyclic AMP will be formed, and this cyclic AMP will cause activation of protein kinase regulator protein. Liver के अंदर है ये साइक्लिक एमपी. पहला काम क्या करेगा? इट विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज रेगुलेटर प्रोटीन. वो क्या करेगी? अगला स्टेप ये है, इट विल एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज. ये इट इज प्रोटीन काइनेज रेगुलेटर, एंड सो दिस प्रोटीन काइनेज विल बी एक्टिवेटेड बाय दिस. So and then this will cause the phosphorylation. It will cause the activation of phosphorylase B kinase. Phosphorylase B काइनेज, इसके ये भी एक एंजाइम है. इसको एक्टिवेट किया तो ये क्या करेगी? इट विल कन्वर्ट द फास्फोराइलेज बी इनटू फास्फोराइलेज ए. किसी जगह शायद मैंने पहले जिक्र किया था, ग्लाइकोजेनोलिसिस के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज द फास्फोराइलेज ए. Phosphorylase B, which is activated to form the phosphorylase A. So phosphorylase A will cause the breakdown of glycogen into glucose 1-phosphate. It will cut the glycogen molecule into glucose 1-phosphate molecules. And then we have already discussed there is a phosphatase enzyme which can remove this phosphate from this glucose molecule, that is also present in the liver. So it can be dephosphorylation of this that is removal of that phosphate radical from the glucose can take place in the liver, and free glucose will be formed. So free glucose in the liver will be increasing, and it will be diffusing from the higher concentration in the liver into the lower concentration in the blood. So blood glucose level will be elevated. So glycogenolysis is the first. Second slide इसमें देखेंगे all these steps right from the beginning, from the adenyl cyclase, cyclic AMP formation, then next enzyme, and next enzyme. There is amplification at every level. That is, this is glycogenolysis. This increases the blood glucose level by this. That is, each succeeding product is produced in greater quantity than the preceding one. ये जो हमने B kinase regulator का कहा है, हर अगला step will be more. That is amplification, amplifying mechanism of this. यानी ये इसको फिर वापस जाके देख लें. That is, all these steps, that is protein kinase regulator अगर एक बना है, it will lead to the formation of several protein kinases molecules, and it will several molecule B kinase उसकी kinase बनेगी, and so there is amplification and that results into the tremendous rise in the blood glucose level. So amplification at every is there. Very powerful effect to produce the hyperglycemia. Very quickly glycogen is broken down. Kitni quickly? Infusion of glucagon. If you give a drip, glucagon continuous infusion in drip, it can cause the complete depletion of all the liver glycogen within 4 hours. अगर किसी को ग्लूकोगॉन की ड्रिप लगा दें, मुसलसल सप्लाई रखें ग्लूकोगॉन की, एंड इट विल कॉज ऑल द ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ द लिवर टू बी डिप्लीटेड. वो सारे तो टूट के इनको वो जो विच इज़ 5 to 6% ऑफ द लिवर सेल मास, इतनी ज़्यादा ग्लाइकोजन, सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन तो होती लिवर में है. दैट इज विद इन 4 hours इट कैन ग्लाइकोजन कैन कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑल एंड डिप्लीशन ऑफ ऑल दिस. सो दिस इफेक्ट ग्लाइकोजेनोलिसिस इज वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोगॉन टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. एंड सेकेंड मैकेनिज्म आप डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ दिस new glucose, gluconeogenesis from the amino acid. And what is the mechanism? This glucagon also increases the uptake of amino acid by the liver. उसी amino acid को convert करना है into the glucose. So uptake, entry of amino acid into the liver is enhanced into the liver, and it will cause the activation of enzymes. वो enzyme होंगे ना जो amino acid को glucose में convert करेंगे. So all those enzymes, whatever the enzymes may be, so those will be activated. For example, one is activation of deaminase. Amino acid में तो amino group लगा होता है, तो ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में तो अमाइनो ग्रुप नहीं. सो इट हैज टू बी रिमूव्ड. एक एग्जांपल के तौर पर, so for example activation of this deaminase which will remove the amino group from the amino acid, और उसको फिर कन्वर्ट करना आसान होगा. So or
activation of enzyme system for conversion of the pyruvate में amino acid से बन and phosphoenol pyruvate जो ग्लूकोज बनाने में स्टेप है. So हम यहाँ तक की बात कर सकते हैं जैसे सब. Although amino acid की availability and enzyme responsible for the conversion of this amino acid into gluconeogenesis. So this will also increase the blood glucose. These are the two major effects of the glucagon by which it causes the increased blood glucose level, and it is known as the hyperglycemic hormone or hyperglycemic factor. But glucagon has some other effects which are not important in routine physiological routine life, normal life. They are not important. They occur at very high concentration of glucagon, जो आमतौर पर very rare है, होती नहीं है. वेरी हाई लेवल. अगर कोई ट्यूमर हो जाए अल्फा सेल का तो फिर शायद ऐसा हो जाए. तो सो ग्लूकागॉन वेरी हाई लेवल, इट कैन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ एडिपोज सेल्स लाइपेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड्स. आमतौर पर ग्रोथ हार्मोन तो थोड़ी सी भी हो तो वो ये काम करती है. ग्लूकागॉन अच्छी खासी हाई लेवल पे हो देन इट कैन कॉज द मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड एंड देन यूटिलाइजेशन विल अकर. एंड इनहिबिशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड. क्या मोबिलाइज हो रही है तो इनहिबिशन हो रही है, न्यूट्रल फैट कम हो रही है तो उसको डिपोजिशन को रोकती है. सो इट आल्सो इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन रूटीन लाइफ. हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन में ग्लूकागॉन का कोई रोल. हाँ, वेरी हाई लेवल इट हैज बीन सीन एक्सपेरिमेंटली दैट इट कैन इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. So it increases the blood flow to the kidney, ये भी देखा गया. It increases the bile secretion, ये भी देखा गया. And gastric secretion को कम करती है. gastric acid secretion को कम करती है. ये सारे जो फंक्शन है, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिए, मैं भी ऊपर वाले भी हैं. They are all these effects are not important in normal functions of the body. Routinely ये हमें नहीं चाहिए होते. रूटीनली उसका काम सिर्फ वो हाइपरग्लाइसीमिक जो इफेक्ट है दैट रूटीनली काम करती है. वेरी हाई लेवल में ये देखा गया कि ये काम भी कर सकती है ग्लूकागॉन, इसके ये इफेक्ट्स मौजूद है. रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन इंसुलिन के अपोजिट होना चाहिए. इसका अपोजिट ये ब्लड ग्लूकोज लेवल का इफेक्ट तो है ही अपोजिट. it is produced effect is opposite to effects on beta cell. क्या मतलब? Hyperglycemia should inhibit it and hypoglycemia is a powerful stimulus. Insulin के लिए the hyperglycemia is the stimulus, here hypoglycemia is the stimulus. Effect जो opposite हैं तो stimulus भी opposite ही होगा. So secretion in hypoglycemia is very important for the correction of hypoglycemia and normal blood glucose level. That वो negative feedback mechanism. अगर glucose level कम हो रहा है तो it should increase by this glycogen. It is again contribute to the negative feedback control of the blood glucose level. ये अपने तौर पर जैसे नेगेटिव. सो हाइपोग्लाइसीमिया को ये करेक्ट करने की कोशिश करती रहती है. इफेक्ट्स ऑन ब्लड ग्लूकोज ग्लूकागॉन, ये हमने डायग्राम उसमें देखी थी कल या प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने इंसुलिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ इंसुलिन का रिलेशन, वो ग्राफ ऐसे जा रहा था, ऐसे. दैट वाज विद इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन, और ये उल्टा है. That is the with increasing blood glucose level glucagon कम होता है, decreasing causes the increased production of glucagon. अपोजिट होना चाहिए. अब एक और रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन में इंसुलिन के साथ हमने देखा था हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलेट्स द इंसुलिन प्रोडक्शन और हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलेट्स द ग्लूकागॉन प्रोडक्शन. इंसुलिन में हमने दूसरा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस देखा था इंक्रीज अमाइनो एसिड लेवल. वो स्टिमुलस था बीटा सेल के लिए, वो यहाँ अल्फा सेल के लिए भी स्टिमुलस है. ये सेम है, एक ही जैसा बात है. अमाइनो एसिड लेवल इन द ब्लड इफेक्ट इज सिमिलर टू इफेक्ट्स ऑन द बीटा सेल. अमाइनो एसिड बीटा सेल को इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं और अल्फा सेल को ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन के लिए करते हैं. ये इफेक्ट वैसा ही है. सो दिस इंक्रीज अमाइनो एसिड लेवल, ये जो है in the blood, ये especially arginine and alanine लिखा हुआ है, they cause the increased secretion of glucagon. So amino acid they do stimulate the alpha cells as well. इसका importance क्या है? Glucagon produced in response to this increased amino acid level is responsible for gluconeogenesis. इस ग्लूकागॉन ने इन अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है.
सो इट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ये प्रोटीन आर बीइंग सप्लाइड, तो इसके लिए अल्लाह पाक ने ये निज़ाम रखा हुआ है. So amino acid they stimulates the glucagon production as well. और फिर exercise also stimulates the glucagon secretion. क्यों? हम imagine कर सकते हैं exercise में हमें glucose चाहिए. Glucose has to be utilized for exercising muscle. So their beta adrenergic stimulation is responsible. Exercise में there is stimulation, sympathetic stimulation. So this also causes exercise में beta adrenergic stimulation, sympathetic stimulation का beta adrenergic part जो है that causes the more production of glucagon and that is helpful to supply the glucose to the exercising muscle. So these are the stimuli. कौन से? Hypoglycemia most powerful and the amino acid and exercise. Or sympathetic stimulation you can say. So these are the effects of the glucagon हमने discuss कर लिया. एक और not very important hormone लेकिन it is produced from the this islet of Langerhans, that is the somatostatin. It is produced by the third type of the cells, delta cell. जल्दी से दो स्लाइड की भी देख लेते हैं. Delta cell islet of Langerhans, it is all polypeptide of 14 amino acid somatostatin. So secretion is स्टिमुलेटेड बाय हाइपरग्लाइसीमिया. इंसुलिन के साथ पैदा होती है, इंसुलिन भी पैदा हो रही है और ये भी पैदा हो रही है. हाइपरग्लाइसीमिया दोनों को पैदा करती है. एंड इंक्रीज अमाइनो एसिड लेवल वही इंसुलिन वाला, एंड इंक्रीज फैटी एसिड लेवल वही इंसुलिन वाला. क्या मतलब है? ये इंसुलिन के साथ साथ ये सोमेटोस्टैटिन भी पैदा हो रही है. इसकी अहमियत हम अगली स्लाइड पे देख लेंगे. सो इट इज प्रोड्यूस, सोमेटोस्टैटिन इज आल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द इंसुलिन. वही स्टिमुलेटिंग फैक्टर है. जीआईटी हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन को भी स्टिमुलेट करते हैं, इसको भी स्टिमुलेट. सो ऑल द स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ऑफ इंसुलिन दे आल्सो स्टिमुलेट द सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द डेल्टा सेल्स. सोमेटोस्टैटिन इसका नाम बता रहा है, सेम केमिकल एज ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन. पहले भी मैंने शायद जिक्र किया था. इट इज़ जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है फॉर ग्रोथ हार्मोन. ये वही चीज़ है, हाइपोथैलेमस से इनहिबिट्स या डिरिपिटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. So inhibition of the insulin secretion as well. ये देखें, ये क्या कर रही है? साथ पड़े हुए अल्फा सेल को रोक रही है. नो, वो स्टिमुलाई सारे दोनों को इकट्ठा स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस करके इंसुलिन को ज़रा रोक रही है. So it inhibits the insulin secretion. इसका फ़ायदा हम अभी देखने लगे. फ़ायदा क्या है, हिकमत क्या है अल्लाह की इसमें? So inhibition of the glucagon secretion, जो ये स्टैटिन है, ये ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट कर रही है, और ये दो साथ पड़ी हुई इंपॉर्टेंट हार्मोन जो यहाँ पड़ी हुई है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, उनको भी इनहिबिट कर रही है. सो दे आर आल्सो इनहिबिटेड. इनहिबिशन ऑफ द ग्लूकोगॉन, इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन, दोनों को कम कर रही है. तो दिस डिक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी. ये भी इसका इफेक्ट है. जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, क्या इसका इफेक्ट क्या होगा? फूड विल रिमेन देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ द जीआईटी, डाइजेशन को स्लो करती है. एंड इट प्रिवेंट्स ये काम. इसका फायदा क्या है? बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट्स इट इज क्विक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है. ज्यादा देर के लिए न्यूट्रिएंट्स बाकी रहे, आस्ता आस्ता एब्जॉर्ब, क्विक यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. अगर जल्द एब्जॉर्ब होंगे, जल्द यूटिलाइज हो जाएंगे, तो इसको रोकने के लिए, कंट्रोल के लिए, इंसुलिन के काम के भी कम करने के लिए, ग्लूकोगॉन के भी कम करने के लिए, इन न्यूट्रिएंट्स की क्विक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन को स्लो करती है. इट प्रिवेंट्स दिस. सो इट मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. बस इसका ये इंपॉर्टेंट. सो सोमेटोस्टैटिन के इफेक्ट्स है. ये आखिरी स्लाइड देख ले. दैट इज द समरी ऑफ ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन. हमने कैसे की, ये कैसे इंटरप्ले है. दैट इज नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल याद रखने 80 to 90. Fasting is 80 to 90 milligram per deciliter, or after meals of course it will increase. It may go to 120, 130, 140 milligram per deciliter, and it return to the normal fasting level within a few hours. हम डायबिटीज़ में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो ये देखेंगे कि कैसे जल्दी नीचे आती है. डायबिटिक लोगों में नहीं आती और नॉर्मल लोगों में इट रिटर्न टू द नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स. एंड बिटवीन मील्स, जब खाने के दरमियान, ये तो खाना खाने के बाद मील्स है, बिटवीन मील्स फास्टिंग कंडीशन में ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय ग्लूकोगॉन
is responsible for the maintenance of blood glucose level. खाने के बाद तो इंसुलिन काम करके इसको कम करेगी, और खाने के बाद जब कम हो जाएगी सप्लाई के लिए ग्लूकोगॉन विल बी सप्लाइंग द ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस. सो लिवर इज द इंपॉर्टेंट बफर, ग्लूकोज का बफर है. ग्लूकोज अवेलेबल है तो लिवर में स्टोर हो जाएगी, अवेलेबल नहीं है तो इट विल सप्लाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए. इट स्टोर्स ग्लाइकोजन व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल एंड इट सप्लाइज द ग्लूकोज व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल. Supplies glucose when the glucose is deficient in the blood. So summary is insulin and glucagon are more important feedback control system of blood glucose regulation. अभी हमने देख लिया कि हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन आ जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकागॉन आएगा टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. हाइपोग्लाइसीमिया आल्सो स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड एपिनेफ्रिन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा कर सकती है. कल परसों कई दफ़ा जिक्र किया होगा कार्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन का जिक्र मैंने किया हुआ है. एपिनेफ्रिन आल्सो इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ये एपिनेफ्रिन भी प्रोड्यूस हो सकती है. ग्रोथ हार्मोन कार्टिसोल का रोल हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है. So interplay of all these hormone, growth hormone, cortisol, epinephrine, glucagon and liver के buffer action और insulin etc. सारे मिलकर there is the glucose को maintain करते हैं. So that's about the regulation of blood glucose level. So here we end. Our next lecture will be, as I said, we will discuss very important endocrine disorder, that is diabetes mellitus, inshallah, the next lecture. If you have got some question, queries, you can ask in my comment section and I will answer. And please, I always say that please do share these videos to your fellow students, fellow medical people, and so that they can benefit from it. And इसको सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें. थैंक यू वेरी मच.